guessed it right. He said that the world does not remember Alicia Gray. The world only remembers Ram. So the world remembers only the champion, not the runners. करने की कोशिश की है दुनिया प्लीज आप अपने आप को वो बुढ़िया खा ले बहुत जरूरी है the world needs you to solve the problems काबिलियत दुनिया आपको वो नहीं देती और अंदाज अगर कैसे बने अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़े इस कॉलेज में मैं अभी मलिक साहब से अगर पूछूं कि अगर एक बंदे को निकाल चाय बनाने वाला कैंटीन का सबसे मुश्किल काम कहोगे कहते ये प्रोफेसर साहब जो है लॉ पढ़ाने वाले सबसे ये मैं नहीं निकाल सकता Why? Why is the difference? क्योंकि जो सफाई कर रहा है चाय बनाने वाला है तब सुबह एक और 10 खड़े होंगे इस दरवाजे के ऊपर कि नौकरी चाहिए वैल्यू मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा मैं लुक डाउन नहीं कर रहा मैं सिर्फ समझाने के या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पुट क्रॉस करने के सेंस में एक लोअर अडॉप्ट कर रहा हूँ कि इसको वो नहीं लिए मैं इंसान को नीचा कह रहा हूँ वैल्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनसे ये सफाई वाला निकाल सकता हूँ मैं एक बंदा कर मुझे निकाल रहा हूँ ये प्रोफेसर साहब को नहीं निकाल सकता ये लॉ के बैरिस्टर साहब को नहीं निकाल सकता because he's more valuable and that's why you're recognized he's being paid more the company gives him a car the company gives him a house the company gives him a mobile क्यों because you have more value तो value याद रखिएगा प्लीज याद अब ये बड़े सारे 8-10 मिनट रुक के आपको पेश करने की कोशिश करूंगा जो मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ से कि कैसे करें आप देख रहे बातें तो मैंने आपसे करनी है बड़ी जरूरी है जनाब वेरी माइंडसेट और एटीट्यूड होना चाहिए फिर आप कहने बताएं मुझे कौन सिखानी है सुबह तक शाम तो फर्स्ट इज रेज योर बार और आप में से काफी सारे एथलेटिक्स खेलते रहे होंगे वो फीमेल्स एंड मेल बोथ एक जब भी हमारी एथलेटिक्स होती थी हमारे टीचर या ट्रेनर जो भी हमारा होता था एक छोटी बार लगाता था वी हैड टू रन और जंप करना होता अगर वो जंप आपने एक दिन 2 फुट पे लगाया है और 2 साल तक वो बार टीचर या ट्रेनर आपको ऊपर ना करे तो आप कभी 4 या 5 फुट लगा सकेंगे no the reason the bar is staying constant if you don't raise the bar you don't improve पहला ये आपको मेरी तरफ से सजेशन होगी दूसरा convert your should into must I should become a barrister no sir I should be the best lawyer in the country. No, sir. No, ma'am. I must be the best lawyer in the country. Should is a suggestion. Must is an obligation. If you keep suggesting to yourself, your body will behave in suggestion mode. हमारा दिमाग केमिकल रेडिएट करता है हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक हमारे प्लान के मुताबिक आपने सुबह से लेकर खाना ना खाया हो रात हुई हो 11 बज गए जबरदस्त भूख लगी हुई है खाना आते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है आपने कभी अपने दिमाग को कहा कि खाना आ गया चलो भाई पानी भेजो मेरे मुंह में कभी सोचा नहीं सोचा इट इज डन इट्स देयर यही वो केमिकल है जब आप अपने प्लान बनाते हैं तो समझ लें यही केमिकल है जो दिमाग आपसे पूछे बगैर आपको नहीं अगर आप अपने आप को मशवरा देते रहेंगे तो मशवरे जैसे लुब्रिकेशन होगी अगर आप फर्ज कर लेंगे कि अगर डू दिस तो बहुत मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ सिंपलीफाई करते हैं आई एम नॉट श्योर इस बिल्डिंग में लेकिन हम रोजाना इस तरह की लिफ्ट देखते हैं एक फ्लोर से दूसरे पे जाने के लिए सब लोग देखते How many are familiar with the dots जो उसके साथ dots लगे हुए हैं? Not many. Very few, 2-3 लोग. See, thank you so much. And why are we not familiar with these dots? Because it is a should for us. Because we have eyes.
जो शख्स ब्लाइंड है उससे पूछे is this dot sequence is should for you or must for you? वो कहेगा I don't survive unless I know which floor will I go. अब फर्क समझ आ रहा है? should or must में हमारा खास तक बिनाई वाला शख्स ब्लाइंड हो जाता है. Will it take years to learn this? These dots? No, weeks. Because the should has been converted into must. एक important चीज आप याद रखिएगा dear students, जो मैं अपनी लाइफ के साथ होता हूँ. All those humans who are born, all of us are born, we have to go through one of the pains, one of the two pains. One is the pain of discipline that you're going through now. What is pain of discipline? इस वक्त आपकी कमिटमेंट थी किसी दोस्त के साथ जाना था, किसी शादी में जाना था, घर वालों ने कहा था ये सौदा सलम हमें छोड़ना, आपने कहा नहीं, मैं लॉ कॉलेज पहुंचना मेरी क्लास में सोते. एग्जाम आता है, आप शादी में नहीं जाते, किसी दोस्त कजन का यार मेरी पढ़ाई है, मेरा कल एग्जाम, वेकेशन प्लान नहीं करते. That's pain of discipline. If you do not choose to go through the pain of discipline, you will have to go through the pain of regret. यार अच्छा वाला गाँव में दाखिला मिल गया था, फेल हो गया, पढ़ाई नहीं की, मेरा दोस्त इस वक्त टॉप का वकील है, मैं भी यहाँ पढ़ रहा था. That will be pain of regret. और दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? The pain of regret is the pain of discipline is short-lived. The pain of regret is almost sometimes lifetime. दोनों में फर्क है. ये आपके 4 साल 5 साल जो भी आप गुजर जाएंगे, this is the pain of discipline that you go through. Pain of regret, बाकी 40, 50, 60, 70 जितनी अल्लाह ने आपकी जिंदगी दी है, you keep cursing yourself, your time to point at the bड़ा अच्छा है. So you want to choose which pain you want to go through, the pain of discipline or the pain of regret. एक मेरा favorite sportsman है, I keep showing his pictures और आज 3-4 का ऐसी pictures आएगी, he'll be able to so relevant. I love his thoughts, बताता रहता है. ये हम और मलिक साहब जैसे जो थोड़ी एज की लोग हैं ना, हमें ये बचपन पता था मोहम्मद अली बॉक्सर है, नया लाइफ शुरू हुआ था. सॉरी सर मैं आपको एज के नाम पर बताई जा रहा हूँ, ये बॉक्सर 6 फुट 3 इंच का बॉक्सर था, 200 पाउंड वजन. मुझे लगता था अमेरिका से नया लाइव आता था, आपको 2 बजे देखते थे, मुझे लगता था ये इतना 6 फुट 3 इंच का आदमी है, जब पढ़ते थे मुक्का इतना जोर से मारता है, इसके मसल ही मेरे से 4 गुना इसका बाजू है, मारता देखते थे. इसमें साइंस क्या है? No sir. You know what he said once? He said, I hated boxer सुनेगा. I hated every minute of training. I said, don't quit. Suffer now and live the rest of the life as a champion. Person like him also hated training, who was 6 feet 3 inches, who was huge. He said, no. गुजरो उसके अंदर से. ये मैं आपको सिर्फ सबूत के तौर पर बताना चाहूँगा. तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि किसी ने इससे पूछी, ये तो मैंने आपको भी पढ़ दिया वैसे ही बताया उसको. एक और इसके बड़ी इंटरेस्टिंग किसी ने पूछी. इसे किसी ने पूछा, how many sit-ups do you do in a day? ठीक है. Beautiful. What he said? He said, I don't count my sit-ups. I start to count when it starts to hurt, when I feel pain. But that is when it matters. अगर मैं 50 दफा सिटअप्स कर चुका हूँ, कर सकता हूँ एक दिन में, और मैं 15 साल में 50 करता हूँ, तो how will I break? He said, जब उसके बाद 50 के ऊपर जब तकलीफ शुरू होती है, वहां से काउंटिंग शुरू करता हूँ. This is what I try to explain, कि हमने रेस कैसे करनी है. So you got to choose to do more than what you did yesterday. And the question would be why? सेल्फ-क्रिटिसिज्म होता है खुद तरसी, खुद का तरस खाना. सोच बड़ी सर्दी है, वैसे भी धुंध लग रही है, आया कोई नहीं होगा, मोटरसाइकिल भी कोई नहीं, इसको मेरा ठीक छोड़ेगा भी कोई नहीं, कल भी भूला रहता है, ढाई दिन चलान भी होता है, रहने ही होता. अपने आप को
वो दूसरी वो तस्वीर होती है, उसकी तो सिफारिश है, उसके तो पैसे हैं, उसका तो बाप अमीर है, उसको तो नौकरी मिल जानी है, मैंने पढ़ के क्या करना, ग्रेड कर भी लिया, ये भी सेल्फ बिलीफ। So you got to come out of it. And to come out of self belief, you must stop blaming others. And when you stop blaming others, you will ask me, why should we stop blaming others? Please याद रखिए, very important now. Please remember that it may be their fault, but it is your problem. दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे एक धक्का मार जाता है दोस्त पानी में और मैं डूब रहा हूँ, कसूर किसका है? दोस्त का। धक्का मारा, डूब कौन रहा है? So repeat करता हूँ पिछली बात में, it may be their fault, but it is your problem. Please याद रखिए। अच्छा, मैं बहुत सारे आप जैसे नौजवानों से मिलता हूँ ना, इनफॉर्मली, young people tell me that obviously क्या करें? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, opportunities equal नहीं है, सिफारिश है, जो भी है। जैसे कि हेल्पलेस है, हम क्या करें? मैं तो अकेला स्टूडेंट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक प्रोफेसर हूँ, अकेला क्या? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बड़ा हूँ। What do I do alone? Please याद रखिएगा, are we really helpless? मैं सबको कहता हूँ, helplessness is a relative term. Relative term. आजकल हमारे बच्चों को आप बर्गर होम डिलीवरी ना करें तो बच्चा कहेगा कि सबसे अगर कोई अंडर प्रिविलेज बच्चा है ना, कोई पाकिस्तान में सुबह मैं हूँ क्योंकि मेरी माँ ने या मेरी बहन ने या मेरे भाई ने, मेरे फादर ने बर्गर नहीं मंगा, तो मैं आपको हेल्पलेसनेस दिखाता हूँ होती है। हेल्पलेसनेस जो ये होती है, ये हमारे बावजूद एंसेस्टर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, दिस इज हाउ दे ट्रैवल्ड। 10,000 लोग ट्रेन में सफर करके आते थे, 5,000 जिंदा पहुंचे थे, 5,000 डेड बॉडीज पहुंची, और गोलियों से मारे हुए नहीं, खंजर तलवार और बच्चियों से मारे हुए। दिस वाज हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस ये देखें, गाजा टुडे, दिस इज हेल्पलेसनेस। जो जमीन पे जो कुछ बीती है ऐसी बीमारी के बाद, ये 2008 में हुई थी और आज भी हुई, ये कुछ गुजरती है और जो कुछ बचता है वो ये कुछ बचता है। And I thought that we have improved last many years and we civilization has come a long way, but I then realized in 2023 it's the same. This is what business. This is what is left. तो हम जिस इस बिल्डिंग में मॉडल टाउन में बैठ के एयर कंडीशन हॉल में एबल फैकल्टी कंपेयर, अगर हेल्पलेसनेस देखनी है तो बच्चे से सीखनी चाहिए। क्या किया इसको बोलते हैं? गार्बेज के बैग, फिर भी पाकिस्तान से झंडा लगा। हेल्पलेसनेस देखनी है तो इस मोची से पूछा है, मेरे वाली का मोचिया लिखा हुआ है 14 अगस्त की खुशी में जूते मुंह पर होता है। तो इट्स द माइंडसेट, isn't it the mindset? अगर एक मोची अपना कर्ज ये लिख के उतार रहा है कि 14 अगस्त की खुशी में जूते मुंह पर होता है, it is the state of mind. तो उससे हमें देखना। नंबर 3 पॉइंट है कि चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। बहुत सारे अकीदे, ख्यालात, लोगों की राय, जजमेंट आपको ये कहती रहेगी कि छोड़ो यार, इतना होता ही नहीं है, इतना पढ़ भी नहीं सकते, ये ग्रेड भी किसी का नहीं कभी आया। ये जो पहाड़ पे लोग गए होते हैं, मैं मानता हूं कि इन्होंने पहाड़ नहीं सर किया होता, इन्होंने आराम, तसल्ली, सुस्ती उसको सर किया होता है बुनियादी तौर और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स को चैलेंज किया होता। क्यों? क्योंकि प्लीज याद रखिए, ये जो मैं इससे एक और समझाने की कोशिश करता हूँ, 1954 तक जब से दुनिया बनी है, since the universe came into being 1954 तक, डॉक्टरों का, मेडिकल साइंटिस्ट, हकीमों, तबीबों का ख्याल ये था कि कोई इंसान 4 मिनट से कम में 1 मील नहीं भाग सकता। एंड द रीजन इज कि हमारे लाइफ
हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, हमारी हार्ट बीट, हमारे ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन इस काबिल नहीं है कि 4 मिनट से कम में भाग। यदि स्पीड ज्यादा करेंगे तो आपके सांस उखड़ जाएगा, आपकी सफोकेशन हो जाएगी, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, you will die. ये साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया हुआ 1954 तक, just for 70-80 years back. And there comes a person who says I will run. Roger Bannister. इसने कहा I will run. डॉक्टरों ने कहा कि crazy. उसने कहा I will make an attempt. उन्होंने कहा you will die. But it doesn't matter. He ran and covered 1 mile in 3 minutes 59 seconds. And with that barrier, the mind के 4 मिनट से नीचे नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बताने के लिए नहीं स्लाइड दिखा रहा आपको, मैं ये बताने के बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया जो सदियों में नहीं टूटा। एंड आज तक तकरीबन 17,000 लोग 4 मिनट्स ऑफ माइल कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने ये सोचा कि अगर ये कर सकता है या ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता। सो मैं साबित ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इज द माइंडसेट। तो लाइफ में जो गैम्बल जितना आप फोकस करेंगे ना, जी मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, आपकी सारी एनर्जी उधर जाएगी। टोनी रॉबिन्स इज वन ऑफ द गुड स्पीकर या राइटर है, मैं इसको पढ़ता हूँ। उसके बाद में सामने 80s में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान, तो मुजाहिदीन में शामिल ये वो बच्चे हैं। और मैं ये वाला जहाज उड़ाता था जिसकी ये तो जहाज है, ये उसकी गन्स लगी हुई है, जरा मुलाजा कर लें, और एमुनेशन है वो जो उसने असला एक गोली पकड़ी है, दिस इज वन बुलेट एंड वी हैड अबाउट 200 बुलेट्स लाइक दिस जहाज के अंदर। हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ जाया करते थे कि फायरिंग रेंज है जो आपको नजर है, ये जो व्हाइट लाइन है नीचे नजर आ रही है, इसके ऊपर टारगेट लगे हुए। ये किया ताकि आपको मैं ज्यादा फ्लाइंग फ्लाइंग एक घंटे में नहीं सिखा सकता, तो ये जरा सादा कर दूं। ये जो 4 आपको नजर आ रहे हैं व्हाइट डॉट्स, ये है टारगेट्स लगे हुए। और ये जो येलो डब्बा नजर आ रहा है टॉप पे, यहाँ पे एक और पायलट जमीन पे बैठा होता था जो कंट्रोल करता था इन चारों जहाजों को जो ये घूम रहे हैं पैटर्न के अंदर, और ये बारी बारी आके फायर करते थे टारगेट को। वही जो गोलियां मैंने दिखाई है प्रैक्टिस करते थे। यहाँ तक तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये अफगान बच्चे जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये अगर आप देख रहे हैं टारगेट से बिल्कुल पीछे येलो लाइन में कर्व्स सी ऐसी स्नेक टाइप कवर आ रही है, येलो वो एक नाला था वहां। जब ये गोलियां मारते थे जहाज, तो जो केसिंग होती थी ना जिसको हम खोखा कहते हैं, वो जो डेकोरेशन की घरों में लगाई होती है बाद पीतल शीतल चमकाया जाता है आर्मी अफसरों में, तो वो पीतल जो है वो बड़ा महंगा होता था। महंगा इस सेंस में को बिकता था, ऐसे कबाड़िए ले जाते थे। एयरफोर्स ने ठेका दिया हुआ था एक ठेकेदार को कि जब फायरिंग खत्म होती थी वो केसिंग इकट्ठी कर लेता था जाकर और बेच देता था। इन बच्चों ने सोचा कि ये जो खोखे उठा के हम क्यों बेच सकते हैं, लेकिन बेचने का मसला ये था कि फायरिंग हो रही है और उसके फौरन बाद ठेकेदार के बंदे तो वही होते थे। तो बच्चों ने इनोवेशन ये लगाई कि अगर ये खोखे उठे या केसिंग उठानी है तो ड्यूरिंग द फायर, अब आप अंदाजा लगाइए 15 सेकंड का गैप होता था बिटवीन वन शूटिंग डाउन एंड द अदर शूटिंग एंड द अदर वन शूटिंग। अब मैं खुद इस जहाज में भी बैठा कर चुका हूं, और वो जो येलो डब्बा जिसमें हट है ट्रैफिक कंट्रोल टाइप, वहां से बैठ के जब पायलट की जमीन पे बैठता था वो कंट्रोल करते थे हम लोग, तो वहां से मैं देख चुका हूं। आप अंदाजा लगाइए बच्चे क्या करते थे, ये उस नाले में छुप जाते थे, कितना सर निकाल के इतने थे बच्चे। अब एक जहाज हमने आई फायरिंग की, फायर करते जब जहाज ने अपना मुंह ऊपर उठाया, इनको पता था कि जब ये मुंह ऊपर उठा देता फिर फायर नहीं करता। और दूसरा जहाज डाइव में आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, उसको पता है जब तक ये मुड़ रहा है ये फायर नहीं करेगा। ये 15 सेकंड है मेरे पास, ये उस नाले से निकलते थे, गोली की तरह टारगेट के नीचे आते थे, और वो केसिंग इतनी गर्म होती थी स्पीड की वजह से, जब फायर होते थे तो वो पकड़ नहीं सकते थे आप हाथ में स्पीड की वजह से। तो ये कमीज की अपनी चोली करते थे यूं करके, उसमें 2-3 खोखे डालते थे और गोली की तरह भागते थे, और जब तक अगला जहाज फायर करता था ये छलांग नाले में लगा के अपनी जान बचाते। ये मैंने स्टोरी क्यों बताई आपको? When the focus goes, the energy goes. Look at the focus. मैं सारी दुनिया में रहा हूँ, मैं सारी दुनिया में ट्रेनिंग की कराई है, मैं दुनिया का एक बच्चा भी आपको नहीं बता सकता किसी और मुल्क का जो ये हरकत कर सकता। Only we can do it. तो मैं बताना साबित करने की लुक एट ह्यूमन कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, लुक एट द जजमेंट। और मैं अगर जमीन पे बैठा होता था तो मुझे
हवा से तो नजर नहीं आता था ना कि बच्चा भाग के आया, वो ऊपर से इतनी स्पीड में मारते थे। नीचे बैठा मैं सोचता था अभी सारे रुकवाऊं क्योंकि बच्चे भाग के आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे से टाइमिंग इतने अच्छे मैच किए हुए थे, अब तो कमाल प्रिसीजन से वापस जाते थे। तो उन्होंने हमारी फ्लाइंग हार्डली कभी कोई रोकी हुई शायद। You should be persistent, number 4. न्यूटन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, it is not that I am smart, it is just that I stay with the problem longer. मैं अक्सर फैमिली को भी और वाइफ को भी और सबको कहता हूँ कि वो सुना था, an apple a day keeps the doctor away. But is it only for one day apple? No, it's not one day apple. It will not keep you away. मेरे फैमिली में तो होता है, जो एक दिन आधी रोटी खाई तो कहते हैं लग नहीं रहा कमर को, मैंने क्योंकि घर में रहना होता है तो आई हैव टू से यस यस, बड़ा फर्क लग रहा है, एक रोटी आज छोड़ने से लग रहा है, लेकिन एक्चुअल नहीं होता। मैं आपके सामने याद नहीं ना कल में do what is not replaceable by others. मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आप सफाई वाला और चाय वाला can be replaced today, but आपका dean, head of the department cannot be replaced by within one day. So you got to do something which makes you not replaceable. पुराने ज़माने में होता था good enough. I believe good enough is not good enough anymore. लेकिन उसके पीछे आपको effort करनी चाहिए. Coming back to Mohammed box. तो दूर हमें याद है इसके पीछे लाइटें देखने कितनी लगी हैं. छत ऊपर नजर आ रही है. जो लोग थोड़े मेरी तरह शौकीन हैं वो याद करें, नहीं है तो घर जाके देखिएगा जिसकी YouTube. ये डांस करता था ऑपोनेंट के सामने. ये को 3 इंच का देने लगे तो ह्यूज चढ़ाता था उसको. अब ये रिलेट कर लीजिएगा डांस वाली बात मैं अगली स्लाइड पे दिखा दे रहा हूँ. क्या कहता है? It is won or lost far away from the witnesses, behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights. कहता है जंग मेरी या वॉर या मेरी फाइट जो है वो हारी और जीती जा चुकी होती है पहले से, जो मैंने गुड़ डाला होता है. That's the point actually what I'm trying to say. And can somebody tell me what is the biggest difference between human beings and animals? Can anybody? Deeply. Intellect. जानवर में intellect नहीं होता. अगर आपके सामने दरख्त पे मॉल टाउन में इसको परिंदे बैठे शाम को मगरिब को मैं गोली चला दूं, उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? नहीं, इंटेलेक्ट ही हुआ ना, तो सोच सोचने को खतरा हो गया है. ये तो समझाइए. जब जानवरों को भूख लगती है वो शिकार करते हैं, अटैक कर देते हैं. फिर जो बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यस प्लीज लिसन, थोड़ा सा उसको मैं अगर आप इजाजत दें तो बढ़ेगा. The biggest difference is that human beings have ambitions. Animals don't have ambitions. Ambition. I want to be the best barrister in the town. I want to be the best lawyer of the country. जो dog पैदा हुआ है, जो horse पैदा हुआ है, जो cat पैदा हुई है, वो नहीं कहेगी कभी horse या cat या dog. I want to be the best in the country. We have dreams. All of us have dreams. Please have it. So it is not what you do, what you practice in private. It is what you practice in private. You will be rewarded for in public. ये जब आप घर जाके पढ़ाइयाँ करते हैं, नहीं आ जाता किसी का. अगर आपका जीपीएस सिस्टम है या कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज है, will it come automatically? भाई करता चलता तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते और अल्लाह ताला में ज्ञान करते हैं. छठी मेरी रेसिपी या फॉर्मुलेशन है, develop the power of positivity. अपने आप को पॉजिटिव करें. And then again, I will not check your knowledge, but I'll ask you, do you know at what age the human brain or the human mind or the human beings operate at genius level? If somebody knows the figure, please raise the figure. I'm asking, what is the age that human beings operate at genius level? Age? Yes, please. 25. 25, okay. Anybody else? 40. Yes. 20. Okay. 14 to 21. 14 to 21. Yes, please. 40. 40s. Okay, great. G. 7 to 7. चलिए इसमें 7 से कोई 40 का ग्रेड चल रहा है, लेकिन जी आप 16 to 25. नहीं जी, सारे नीचे डिवाइड कर तकसीम करें, सारे नीचे आ जाए. The human mind operates at genius level at the age of 4.
Scientific कह रहा हूँ मैं अपनी कोई रिसर्च करके आया at the age of 4. But then there will be a good question coming from you. Are you crazy? 4 साल में कैसे हो सकता है human mind genius? Human being. Scientists ने calculate किया that human beings operate at genius level at the age of 4. But what happened to genius level then? You could ask me कि फिर क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है genius 4 के बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ. The scientists जिन्होंने ये सारी स्टडी की, they said by the time a child reaches at the age of 18, 18, girl or a boy, he or she has heard the word no. मत करो, ये क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करना, ये कैसे कर सकते हो, don't do this, 150,000 times. And you know what is the number that the child has heard, the same word, same age, the word yes, बिल्कुल करो, बिल्कुल कर सकते हो, why not? 5,000 times. So the ratio is 5,000 times versus 150,000 times. 1 is to 30 ratio. वो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप नो सुनते हैं तो आपके वही जो केमिकल मैंने कहा था जो मुंह में आते हैं वो ब्रेन आपका छोड़ना शुरू कर देता है कि यू आर बीइंग डिस्करेज. आप हैरान होंगे साइंटिस्ट आपने इस पे मैं कहना चाहता हूँ बाय द टाइम you reach at the age of 18 जो आपका genius level था it is left to 10% only, and by the time you are 28 it is left to 2% what you had at 4 years age. आप सोच रहे मैं कितना माइनस पे चल रहा हूँ तो माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट. मैं ये कहता गया था मुझे इतना जबरदस्त पोस्टर लगा क्योंकि मैं ग्राफिक सारी स्लाइडें मैं खुद बनाता हूँ, पोस्टर मैं खुद बनाता हूँ और मैंने आके उसका ये पोस्टर बनाया, छोटा सा एक पोस्टर बड़ा था ब्लैक एंड व्हाइट मैंने ये बनाया. लुक एट द पॉजिटिविटी, मतलब दिस इससे ऊपर नहीं हो सकती. कहता है इफ यू थिंक ऑफ बीटिंग मी you better wake up and if you dream of beating me you better wake up and apologize. माइंड सेट है कि तुम ख्वाब में भी अगर मुझे हरा रहे हो या हराने का सोच रहे हो तो उठो और मेरे से माफी मांगो. That's a limit to positive. This should be overconfidence. But look at the way he impacts the other people. कि तुम ख्वाब में भी मुझे अगर हराने का सोच रहे हो तो मेरे से उठ के माफी मांगो. This changes the complex. Yourself and the others. Number 7 is prioritize what you want now and what you want the most. Lot of people who do not perform well, please remember they carried out or carried away because what they want now. Relax करें यार, मरी चलते हैं यार, कढ़ाई खा करते हैं यार, छोड़ यार, शॉपिंग यार, ये गलत है. They say no. I want that to be the target, and not what I want now. I want the most. I want to be the most successful. I want to drop out of college. I want to break the record. And it doesn't happen just like that. Please याद रखिएगा. मैं आपको एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड का आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाहता. गिनीज वर्ल्ड बुक में एक स्पोर्ट्समैन एक खिलाड़ी का नाम है, आपको आज आता होगा. 555 मैचेस continuous unbeaten. Jamil Khan. 5 out of 600 he lost one match. It is a Guinness book. Correct? But that means the price tag waiting for you. इसका समझना शुरू कर दे कि मैं तो इन चीजों से ऊपर हूं. और कार्पेटिंग का मतलब है लिव एवरी मोमेंट, यानी हर लम्हे जियो, हर मिनट का इस्तेमाल करो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नंबर 9, बी इमोशन. सेकंड लास्ट पॉइंट है बी इमोशनली कंटेजियस. इमोशनली कंटेजियस क्या होता है? कंटेजियस तो सबको पता है ना, कोरोना कंटेजियस बीमारी थी, यानी एक से दूसरे को लग जाती थी. तो मैंने सोचा तो इमोशनली आप कंटेजियस कितने हैं कि मतलब आपसे अच्छी चीजें दूसरे को लगे, आपसे अखलाक लगे, आपके लोग कंपनी बैठना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आप जैसे कि एटीट्यूड मेरा भी हो जाए, तो यू गोट बी इमोशनली कंटेजियस. इमोशनली कंटेजियस मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ.
हम दूसरों से असर लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ। मैं घर में बड़ा डिप्रेस बैठा हूँ, दोस्त ने कहा यार आ जाओ पार्टी में, खाना है, बर्थडे है, खाना, मैं वापस आता हूँ, मेरा मूड ठीक हो गया। मैं बड़ी खुशी खुशी जा रहा हूँ हमारे फौत के लिए किसी घर में, मैं बीवी से गप्पे लगाते जा रहा हूँ, म्यूजिक भी चल रहा है। जो भी फौतगी वाले घर जाते हैं उधर से मेरी बीवी के रोने की आवाज आती है, मैं भी इधर पकड़ के उस बेचारे को दिलासा दिला रहा हूँ, वो मेरी सारी वो जो म्यूजिक श्यूजिक चला गया, रोने धोने की आवाजें आ रही घर से, एंड आई स्टार्ट टू फील सैड। इट्स बिकॉज द ह्यूमन बीइंग आर इमोशनली कंटेजियस। हम पिक करते हैं दूसरों से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। स्टीव जॉब मेरा फेवरेट चाहे इसलिए नहीं कि फोन में उसका यूज करता हूँ, इसलिए कि आई लाइक व्हाट हिज थॉट्स। उसने मरने से पहले 12 अपने पॉइंट्स लिखे हम लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि यार ये याद रखना मैं तो जा रहा हूँ। And 12 points मैं नहीं पढ़ना चाहता, एक point that I loved and I want to mention everywhere, चाहे मैं slide में हूँ या ना हूँ, I talk about it. ये याद रखिएगा, मैंने अभी क्या कहा आपको कि time important है। वो क्या कहता है? कहता है you will be loved when you're born, you will be loved when you die, in between you have to manage. आप दुनिया में आए हैं, आपको मोहब्बत मिलेगी, आप दुनिया से जाएंगे, आपको मोहब्बत मिलेगी, इन बिटवीन आपको मोहब्बत मिलेगी कि नहीं, आपका अपना हिसाब है कि आप कितनी मोहब्बत पाओगे। इमोशनली कंटेजियस होने का एक और है कि यू शुड बी ग्रेटफुल टू द पीपल हु आर इन योर लाइफ। 1954 से 75 तक एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। वियतनाम बॉर्डर, कहाँ अमेरिका कहाँ वियतनाम, जहाँ के वहां बमबारी शुरू कर दी अमेरिका ने, जंग लड़ गई, 25-30 साल लड़ते रहे लोगों की तरफ। ये पायलट था अमेरिकन एयरफोर्स का चार्ल्स ब्राउन, 1973 की बात है। ये वियतनाम के जो कैंप था, 6 साल वियतनाम में कैदी रहा, 4x5 टाइप 4x6 कमरे में, 6 years। ये कहता है कि जब मैं अमेरिका गया वापस 6 साल बाद, रिटायर हुए मेरे तो मैं अनईजी होना शुरू हो गया, यानी मेरी तरफ ही क्यों देखता जा रहा है। वो अंदर ही घूरने से अनईजी हो जाता है। He said, I started to feel uncomfortable कि क्या मेरी तरफ हाथ छोड़ देता। कहता थोड़ी देर बाद वो उठ के फिर से मेरे पास आया और आगे मुझे कहता है, चार्ल्स ब्राउन, इसका नाम लिया। मैंने कहा यस आई एम। उसने कहा यू फाइटर पायलट? उसने कहा यस। उसने कहा सर्व इन वियतनाम वॉर? उसने कहा यस। एंड यू वेंट फॉर दैट मिशन? उसने कहा यस। एंड यू हैड अ मिसहैप विद द एयरक्राफ्ट एंड यू बेल्ड आउट। वो बड़ा तंग आया, जैसे हो जाता है, यानी इतना कुछ इसको मेरे बारे में पता है, आई डोंट नो इट। कहता यस। एंड डिड दैट पैराशूट वर्क दैट डे? जिससे तुम बेल्ट किया वो काम कर गया उस दिन? अब और लगा तुम उससे कहा यस, बट हु द हेल आर यू? उसने कहा आई पैक्ड योर पैराशूट दैट डे। चार्ल्स ब्राउन कहता है कि मैं घर आके सारी रात सो नहीं सका। उसने कहा यार एक शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बचाई, मैं उसके जैसे भी वाकिफ नहीं। तो उस दिन उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा यू शुड लर्न टू नो हु पैक्स योर पैराशूट। तो पैराशूट ये ना समझे कि भाई फाइटर पायलट का पैराशूट होता है, हमारा नहीं है। आपकी भाई हो, बहन हो, मदर हो, फादर हो, बेटा हो, जो भी, they pack your parachute every day. So please learn to be grateful to the people and remember who packs your parachute. एक चीज मेरी इस तरह की टॉक की कोई फीस नहीं होती, बट एक छोटी सी फीस है, अगर मैं घर जाके देखूंगा आप लोगों ने दे दी है कि नहीं दे दी है। इट विल बी ऑनलाइन ट्रांसफर है, वो मैं आपको इजाजत है सर। मैं आई आउट ऑफ पैशन मैं प्रेरणा के चक्कर में मैं फीस साहब ने तो कायदे आज़म का कोई लेक्चर किया था जो मैं अमेरिका कनाडा तक देख के आया हूं, ये अनटोल्ड एंड अनसीन मिस्टर जिना, ये मैं लेक्चर देता हूं। बट वी थॉट कि हम कायदे आज़म की वो बर्थडे आ रही है उसकी फ्री करेंगे, बट वी थॉट ही इज इंटरेस्टेड एंड आई आस्क्ड कि इसके पहले दे दें। तो मैंने कोई 4-5 साल पहले मैं जब अमेरिका कनाडा और इधर गया था यूके, तो वहां पे मैं इस तरह की ऑडियंस में 300-400 लोगों को लेक्चर दे रहा था। तो जब मुख्तलिफ शहरों में दिए
तो दे आर आस्किंग मी कि आप तो वापस चले जाएंगे, तो ये हमने बच्चों को दिखाना था, हमारी बीवी जॉब पे है, हमारा बेटा नहीं आया, हमारी मदर नहीं आई, वो भी आना चाहिए रात। तो आई केम बैक, मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि आपको कोई यूट्यूब बनानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री उस पर डाला है। तो आप सोचे फिर कोरोना आ गया 18 के 19-20 में, तो मैंने फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल से खुद ही एडिटिंग सीखी घर में रहते, एंड आई मेड अ चैनल फॉर ऑब्वियसली कम्युनिटी, और वो टॉपिक था कायदे-आज़म का। पहले वो बॉर्डर पार हमारे दोस्तों ने कायदे-आज़म की वजह से उसको ब्लॉक किया, तो उसका नाम भी मैंने माई से ना रखा होता, और बाद में वेबसाइट पे इस नाम से, फिर मैंने उसको बदला खालिद चिश्ती किया, तो मेरा नाम है, द चैनल है जस्ट ट्राइंग टू शेयर विद यू। अच्छा, वो हुआ ये कि कायदे-आज़म का जब हो गया, तो फिर कायदे-आज़म के पीछे पड़ गए, और जब फिर मैंने एयरफोर्स की वीडियोस छोड़ गया, गोली प्रॉफिट पीस के कौन है, उन सबसे पहले नाम बनना चाहिए था, वो छोड़ गए, बहुत सारे और भी छोड़ गए, ईदी छोड़ गया, कायदा मोहम्मद अली खान छोड़ गए। Have you ever thought when I leave this earth, how will I leave? What's it there? Yeah, I will be out of those millions जो आए और चले गए, तो पैदा हुए थे, आगे फसल रिप्रोड्यूस की, काम किया, नौकरी की, तनख्वाह कमाई, कोठियां खड़ी की, चले गए, पर सब। So you got to tell yourself, and I keep reminding many people that please remember, only please do not change their postal address. Postal negative sense में नहीं लीजिएगा कि मैं कोई शादरा या औरतों की तरह ड्रेस के खिलाफ, मैं पोस्टल ड्रेस कह रहा हूँ कि अगर आपके लॉ में एक ट्रक आज लगा दे 100 साल बाद नहीं होगा, लेकिन आज यहाँ आपको 4 साल 3 साल लगा के जाना है, तो आप यहाँ नहीं होंगे, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आपको कहीं का कहीं होना चाहिए। तो इंसानों में और दरख्तों में ये फर्क, हमने आगे जाना। आखिर मेरी क्लोजिंग से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, कब्रिस्तान जाते हैं लोग, तो ये जब भी इस तरह डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और डेट ऑफ डेथ लिखी होती है, ना ये आपके कंट्रोल में है, ना वो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है the dash. This is your life. How do you spend this? How well you spend this? दुनिया इस dash से आपको याद रखेगी, ना इससे ना उससे। जितने पीछे जिनके मैंने अभी नाम लिए उनको याद करें, उनकी ना इस वजह से याद है, ना उस वजह से याद है, उनके इस dash की वजह से याद है। Before I close, I like to narrate a short story. 1968 ओलंपिक हो रहे थे अमेरिका में, ये तंजानिया का स्पोर्ट्समैन था स्टीफन अकबारी, जॉन स्टीफन अकबारी। ये मैराथन रेस का स्पोर्ट्समैन था जो दुनिया में सिर्फ 40 किलोमीटर रेस होती है, कुछ 25 किलोमीटर स्टेडियम से बाहर भागते हैं और 10 किलोमीटर स्टेडियम में अंदर भागते हैं, तो रेस खत्म हो जाता है। मैराथन रेस 80 के करीब कॉम्पिटिटर शुरू हुए ओलंपिक्स में, 16 किलोमीटर भी दौड़ा था, तकरीबन 24 किलोमीटर लगी थी, तो स्टीफन अकबारी फेल डाउन, गिर पड़ा, उठने की हड्डी टूट गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, एम्बुलेंस साथ चल रही होती है, फौरन पहुंच गई, उन्होंने इसको उठा के एम्बुलेंस डाला, पट्टी की और कहा ये अस्पताल आपको ले जा रहे हैं, आपका फ्रैक्चर हो गया। उसने कहा नो, मेरी पट्टी कर दें, आई वांट टू रन। वो बड़े हैरान हुए, तुम्हारा फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, हम नहीं रन। उसने कहा नो, तो पट्टी बांधी, इस तरह भागता भागता लेन करता हुआ रेस आगे चली गई, लोग 2 घंटे आगे चले गए। जब वो स्टेडियम में दाखिल हुआ पुलिस और एम्बुलेंस के साथ, तो वो अवार्ड दिए 2 घंटे हो चुके थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की। तुम्हें नहीं पता कि रेस कब की खत्म हो चुकी है, तो why were you running? My country sent me 5,000 miles away to finish the race. So Allah Ta'ala has sent us to this universe not to start the race, to finish it and finish it well. Thank you. If there are questions, please go ahead. Please. You talked about 2019 February 26th and the event that took place. So, sir, there was a brought to fighting down. So, sir, do you think that there was a lot of talk that there was massive pressure and we couldn't resist that and had to release him? So, do you think that for me, really it was a gesture of goodwill gesture and for me really? I know. Thank you.
इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि मेरे सिलेबस पे इसको थोड़ा सा हटके, लेकिन मैं क्योंकि मैंने वर्दी पहनी इतने साल ब्लू कलर की, तो आई शुड आंसर। होता ये है कि दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आप किसी को जिंदा पकड़ने तो आपने वापस करना है, आप यू कांट किल। 71 में हमारे ईस्ट पाकिस्तान में तो 90,000 कैदी थे, दे हैड टू रिटर्न, यू गो टू रिटर्न।